everyone and welcome to our channel Learn Tinkering। आज हम बनाने जा रहे हैं टॉकिंग कैलकुलेटर। पर उससे पहले क्या किसी को पता है कि टॉकिंग कैलकुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मींस कैलकुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो कैलकुलेटर को हिंदी में बोलते हैं गणक। आज हम बनाने जा रहे हैं बोलता हुआ गणक। सबसे पहले हम चूज करते हैं हमारा बैकग्राउंड। हमने अपना बैकग्राउंड चूज करा है चौरासिक। तब उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं अपना कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैं चूज कर रही हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल विथ नो फिलिंग, आउटलाइन ऑफ ब्लैक, इंक्रीजिंग द थिकनेस टू 6, मेकिंग अ बॉर्डर। और हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे स्क्रीन पे फिट हो सके। उसके बाद लेट्स चूज आवर स्प्राइट। जीरो, अब हम यहाँ पे इस स्प्राइट को चूज करके यहाँ पे कॉस्ट्यूम में जाके इसका एक आंसर के लिए बॉक्स बना लेते हैं, जिसकी फिलिंग मैं कर रही हूँ ऑरेंज कलर की एंड आउटलाइन भी ऑरेंज कलर। अब हम इसके साइंस बना लेते हैं। ऑपरेशंस, जिसकी फिलिंग का कलर लेते हैं ब्लू और आउटलाइन ब्लैक। अब हमारे कैलकुलेटर का डिजाइन बन चुका है। लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग। सबसे पहले कोड ऑफ 0, go to the event, bring this when this sprite clicked, broadcast a message, write a new message 0. Okay, go to this black zone, bring this text to speech and bring this command 0. And similarly
यही कोड हम करेंगे हर एक में और यहाँ पे सबको पेस्ट करते जाएंगे। And we are going to do the same with decimal and negative. So let's write here decimal, and for negative we'll write negative. Now we have to make three variables. Go to the variable and make a variable. Operator, answer, number 1, number 2. And we will do large readout. This is our operator. This is our answer. This is number 1. And this is number 2. We'll go to the sprite 1, to the costume, text, color, black, and we'll write it equals to here. Enlarge its size. Now we'll write command for our operators. Go to the event, when sprite clicked, our operator to plus and speak plus. We'll do the same for our every operator. Now we'll do a command for clearing the screen. Go to the event, print when flag clicked, duplicate it, set my operator, answer, number 1, number 2 to 0. Go to the event, broadcast a new message, clear. Text to speech, say clear. Again, duplicate it, and this time we are going to replace this when flag clicked to the when sprite clicked. So whenever I will see it, everything will be 0.
Next we'll do command for equals to. Go to the event, bring this when this sprite clicked, broadcast, new message, equal, text to speech, speak equal, then we'll bring if else operator, operations, if, go to the variables, bring this operator, if our operator is multiply, then set our answer to, go to the operation, bring this multiplication operation, then we'll go to the variable, bring our variable number 1 and number 2 and speak, bring this variable answer. We'll copy this, copy this whole, duplicate it and put it here. If our operation is divide, then we'll replace our operator, put it here, bring the variable number 1 to number 2. Sorry, not here, it's here, number 2, yes. Now again we'll duplicate it, here. If our operator is plus this time, then we'll replace our operator and we'll bring this one. Go to the variable, bring this number 1 and number 2. No, sorry, not here, here, yes. Then else, in else, we will directly set this one only. Yes. And this time our operator is minus. So we'll choose minus here. So it's all done almost. So but now we are going go to this stage and we'll do the command here. Go to the event. Now when I receive 1, then I'll bring this if else, if, go to the operator, bring this equal to, go to the variables. If my operator is equals to 0, then set number 1, go to the operator, join this, bring this, join, go to the variable, bring this number 1, put it here, join number 1 to 1. Then we'll duplicate it and put it here. And instead of number 1, we'll bring number 2. We will do the same with every number. Similarly, we will do this
for decimal and negative. For decimal, we'll put decimal here, and we'll change it to number 2, change it to number 2, and we'll do the same for our negative. We'll put number 1 here and write negative here, number 2 here and write negative here. We'll do this, number 2. So it's done. Clear. 1 decimal 5 plus negative 6 5 equal minus 63.5. Clear.